Question number 6. Represent the number in the complex plane. -1 -3 iota. Coordinate plane में the horizontal line is known as x-axis. It is positive on the right and negative on the left. इसी तरह the vertical line is known as y-axis. It is positive on the upper side and negative on the lower side. इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन दिस प्लेन. पहला नंबर है -1 and 3 आयोटा. याद रखिएगा इसमें जो रियल पार्ट है ये हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा और इमेजिनरी ऑन द वाई एक्सिस. सेक्शन ए -1 -3 iota. -1 it should be on the left side and -3 downwards. -1 -2 -3 point. This is -1 -3 iota. उसके बाद है जी सेक्शन बी, that is 2 + 4 iota. एक्स एक्सिस पे +2 और वाई एक्सिस पे +4, मतलब ऊपर हम जाएंगे 2 3 4. दिस पॉइंट इज 2 + 4 iota. सेक्शन सी -3 + 2 iota. -3 लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस पे -3 और +2 ऊपर आ जाएगा 1 and 2. This point is -3 + 2 iota. Section D 2 - 3 iota. देख लीजिए एक्स एक्सिस पे +2 और वाई एक्सिस पे -3, मतलब नीचे. तो दिस पॉइंट इज 2 - 3 iota. Section E, that is 2 iota, means 0 + 2 iota. On the x-axis it is 0 and on the y-axis it is +2. Here this is the point 0 + 2 iota, yeah, simply 2 iota. F section -3 iota means 0 - 3 iota. 0 and -3 downwards. यहां पर आ जाएगा 0 - 3 iota. Section G, that is 2 + 0 iota. Here this is the point. On the x-axis it is 2 and on the y-axis it is 0 0 2. On the x-axis this is the point only 2. Question number 7. Separate into real and the imaginary parts of each complex number. Section A √2 -√3 iota whole square. Formula apply करेंगे. The square of the first term plus the square of the second term -2 into first term into second term into iota. स्क्वायर रूट से कट जाएगा. दिस इज 2 प्लस यहां पर भी स्क्वायर रूट से 3 और आयोटा के ऊपर रूट नहीं है तो आयोटा पर स्क्वायर आ जाएगा -2. इन दोनों की पावर सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 2 6 अंडर द रूट आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए. 3 into -1 -2 under the root 6 iota equal to 2 plus into minus -3 -2 under the root 6 iota equal to -1 -2 under the root 6 iota. इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या है? that is -1 and imaginary that is equal to -2 under the root 6. Question number 7, section B, that is under the root 2 plus iota whole square equal to the square of the first term plus the square of the second term plus 2 into first term and the second term equal to root
स्क्वायर से कट गया, प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 iota. Put the value of the iota square, which is -1 plus 2 under root 2 iota. 2 minus 1, 1 plus 2 under root 2 iota. इसमें रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा, that is 1, and the imaginary is 2 under root 2. Section C, 2 plus 3 iota whole square divided by 1 minus 3 iota. बर्डमास रूल्स के मुताबिक पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन कीजिए, बाद में डिवीजन करेंगे. द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज लिख दीजिए. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4 3s are 12 iota divided by 1 minus 3 iota. 4 plus 9 iota square की वैल्यू पुट कीजिए, that is -1 plus 12 iota divided by 1 minus 3 iota equal to 4 plus into minus minus 9 plus 12 iota 1 minus 3 iota equal to 4 minus 9 minus 5 plus 12 iota divided by 1 minus 3 iota. मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट पेयर से, that is 1 plus 3 iota divided by 1 plus 3 iota equal to -5 into 1 plus 3 iota plus 12 iota into 1 plus 3 iota divided by the square of the first term minus the square of the second term equal to, मल्टीप्लाई कीजिए -5 से, -5 3s are 15 iota, 12 iota से करेंगे तो 1 से 12 iota plus 12 3s are 36 iota into iota, it is iota square. 1 minus 9 iota square. Put the value of the iota square plus 36 into -1. Minus 15 plus 3, that is -3 iota divided by 1 minus 9 into iota square की value, that is -1 equal to -5 minus 36 minus 3 iota divided by 1 minus into minus plus 9 equal to -41 minus 3 iota divided by 9 plus 1, that is 10. रियल और इमेजिनरी को अलग करने के लिए 10 दोनों से डिवाइड कर दीजिए, -3 by 10 iota, and the real part is -41 by 10 and the imaginary part is -3 by 10. Question number 7D, 1 by 2 plus under the root 3 by 2 iota square. Formula apply करेंगे, square of the first term plus the square of the second term plus 2 into first term, that is 1 by 2, and the second term, that is under root 3 by 2 iota. Square solve करेंगे, 1 by 4 plus under root 3 का square 3, 2 का 4 iota का iota square plus 2 2 से कट जाएगा, and this is under root 3 by 2 iota. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 4 प्लस 3 by 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 3 by 2 आयोटा इक्वल टू 1 by 4 प्लस इंटू माइनस -3 by 4 प्लस अंडर रूट 3 by 2 आयोटा इक्वल टू -2 by 4 प्लस अंडर रूट 3 by 2
iota. सिंप्लीफाई कीजिएगा and this is equal to minus 1 by 2 plus under the root 3 by 2 iota. The real part is minus 1 by 2 and the imaginary part is under root 3 by 2. Section E, that is 1 minus iota divided by iota square, equal to 1 minus iota divided by value of the iota square, that is minus 1, equal to minus 1 into 1 minus iota. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, minus 1 minus into minus plus iota. The real part is minus 1 and the imaginary part is 1. Section F, 1 by iota into 1 minus iota whole square, equal to 1 by, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस iota का स्क्वायर minus 2 into first term and the second term. 1 by iota into 1 iota square, that is minus 1 and minus 2 iota, equal to 1 by iota into 1 minus 1 से कट जाएगा, हमारे पास minus 2 iota रह जाएगा and this is equal to 1 by minus 2 iota square, which is equal to 1 by minus 2 into value of iota square, that is minus 1, which is equal to 1 by minus into minus plus 2. The real part is 1 by 2 and the imaginary part is 0. Section G, 1 plus iota whole square divided by 1 minus 2 iota whole square. दोनों में पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर minus 2 into first term and the second term, equal to 1 plus iota square plus 2 iota divided by 1 plus 4 iota square minus 4 iota, equal to iota square की वैल्यू पुट कीजिए, 1 plus minus 1 plus 2 iota divided by 1 plus 4 iota square की जगह पे minus 1 minus 4 iota, equal to 1 minus 1 plus 2 iota divided by 1 minus 4 minus 4 iota. minus 1 से कट जाएगा and 2 iota divided by minus 3 minus 4 iota. minus 3 plus 4 iota minus 3 plus 4 iota, equal to 2 iota into minus 3 plus 4 iota divided by square of the first term minus the square of the second term, equal to plus into minus, minus 3 to the 6 iota plus 8 iota square divided by 9 minus 16 iota square, equal to minus 6 iota plus 8 into iota square की जगह पे minus 1 divided by 9 minus 16 into iota square की जगह पे minus 1, equal to minus 8 minus 6 iota divided by 9 minus minus plus 16. This is equal to minus 8 minus 6 iota divided by 25. And this is equal to minus 8 by 25 minus 6 by 25 iota. Hence the real part is minus 8 by 25 and the imaginary part is minus 6 by 25.